Good morning, children. I hope you all are fine. We are going to study doing the revisions. We are doing the revisions. In the revision part, we have successfully completed the chapter 1, chapter 2, and today we are going to study about the chapter 3rd. In chapter 3rd also, we discuss about the nervous system. We discuss about the nervous system. We discuss about that nervous system is divided into two parts, central nervous system and peripheral nervous system. Central nervous system is divided into two parts, brain and spinal cord. Now today we are going to discuss about the peripheral nervous system. Peripheral nervous system is again a very important part of our nervous system. It is divided into two parts, somatic and autonomic. Somatic and autonomic. Somatic nervous system is that part of nervous system which is voluntarily, okay, which are under your control. That is the somatic nervous system. Autonomic nervous system is that part which are involuntary, which are not the control of you. So it is that part of the nervous system which is voluntarily, and it is that which is involuntary. When we talk about the autonomic nervous system, our autonomic nervous system is divided into two parts which are sympathetic and parasympathetic. Sympathetic and parasympathetic. Sympathetic nervous system is that part which deal with the fight or flight, whereas parasympathetic system deal with the emergency situation. Fight or flight, when you have to, like, either you fight with the situation or you flight with that particular situation. So that is the sympathetic and parasympathetic. After this peripheral nervous system, we already discussed that our nervous system is divided into two parts, central nervous system and peripheral nervous system. Central nervous system is divided into two parts, brain and spinal cord. Peripheral nervous system is divided into two parts, somatic and autonomic. Now, after these systems, there is another system also which play a very important role in our body, and it is a very important also. It is very important, which is the endocrine system. Endocrine system. Endocrine systems includes the glands. It includes the glands, all are ductless gland, endocrine glands, which play a very important role in our physical structure. As you see, children, when you talk about that there is a disturbance in the mood and all, sometimes you feel that you are not happy, sometimes you feel that you are very sad. So everything is governed by the hormones. Your hormones is there
Because of that hormones release, your body release, your mind release some kind of hormones, which leads to the disturbance in the mood. Just like there is a hormone which name is cortisol. If you heard this word, this hormone name cortisol, it is a stress hormone. ये stress hormone होता है. And when it is released in your mind, in your body, you feel the stress. आपको stress feel होता है. Second, one hormone is there whose name is dopamine. I think you all have heard about this one. Dopamine. Dopamine is that hormone which are known as happy hormone. ये happy hormone होता है. When it is released, your mind will be very happy, you will be very calm and all. So hormones play a very important role in our body. How it is releasing, how much it is released, it very much affect the person's behavior. कितनी amount में release होना है, कितना release होना है, that also affect the person's behavior. Now, let us talk about what are the endocrine glands. So we will discuss all the endocrine glands one by one. One by one, we will discuss all the endocrine glands. So first endocrine gland is pituitary gland. The first endocrine gland is pituitary gland. Pituitary gland is known as the master gland. ये master gland होता है. Children, you know why it is known as a master gland? Because it governs all the glands, all the endocrine system, other. So that's why it is known as the master gland. Okay, इसलिए and most important is situated in the brain, pituitary. Okay, so that's why it is known as that. क्योंकि brain क्या है? Brain is something which we consider it as like a master of our body. It is a master, it is the mind which governs us. Okay? So pituitary gland is known as the master gland. It releases the hormones anterior. There are two types of pituitary, anterior pituitary and posterior pituitary. Both have the different roles. This is in a very well manner explained in your book. Next, after the pituitary is the thyroid. Thyroid gland. It is now in all these glands. What are the things which you have to remember? The two important things which you all have to remember. The one is the location and second is the function. इनका location क्या है और इनका function क्या है? Pituitary gland is also known as growth hormone. ये growth hormone release करता है. So it is responsible for your growth, for your development. And so location इसका brain है. Thyroid gland is situated at the neck. ये neck में होता है thyroid. Okay? And इसकी overproduction and underproduction, it releases the hormones thyroid से. ये कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? थायराइड से. थायराइड हार्मोन रिलीज करता है और ओवर प्रोडक्शन ऑफ थायराइड एंड अंडर प्रोडक्शन ऑफ थायराइड बोथ आर हार्मफुल फॉर द पर्सन. अगर थायराइड ये जो थायराइड ग्लैंड है ओवर प्रोड्यूस हो रहा है तो पर्सन विल बिकम वेरी फैटी एंड वेरी लुक लाइक अ बल्क. एंड इसका अगर अंडर प्रोडक्शन हो रहा है, कम हो रहा है, तो उसके ग्रोथ भी रुक जाते हैं. द पर्सन विल बी स्टंटेड. स्टंट भी हो सकते हैं, लाइक बौने होते हैं. Growth will stunt. So it again play a very important role. Thyroid gland. Okay.
Third is the adrenal. एड्रिनल का लोकेशन क्या है? इट इज सिचुएटेड ऑन द किडनी. ये एज अ हैट की तरह, जैसे कि जो किडनी होती है, किडनी के ऊपर एक टोपी की तरह ये बैठा होता है एड्रिनल का. इट इज सिचुएटेड एट अबाउट द किडनी. ये भी हार्मोन रिलीज करता है, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन इट रिलीजेस. So it is again a very important gland and important for your growth. Pituitary, thyroid, adrenal, then come the pineal gland. Pineal gland is lying near the stomach. ठीक है, स्टमक के पास होता है, एड्रिनल किडनी में होता है, थायराइड नेक, पिट्यूटरी ब्रेन, एंड पिनियल ग्लैंड इज सिचुएटेड नियर द लाइन नियर द स्टमक. इसका मेन रोल होता है डाइजेशन ऑफ द फूड, ये सारी चीजों को कंट्रोल करना. एंड दिस इज अगेन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. The next gland which you have to study in this is gonads. Gonads is the sex gland, okay, and the hormones which are released means here the two things you have to study. One is ovary and one is about testes. The testes are found in males and ovaries are found in females, and both the parts release different hormones, okay. And it also affects the person's behavior a lot. If I already told to you that hormones very much play an important role. Hormones का secretion कैसे हो रहा है? Over secretion and under secretion both are harmful in every case. So proper secretion अगर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि it has a very much link with the behavior. So here we had done all about your nervous system or all about the biological basis of human behavior. We completed about the biological basis of human behavior. Now we will study about the what is the social culture basis of human behavior. Social culture basis क्या है? See, behavior की जब हम लोग बात करते हैं तो हमारा जो बिहेवियर है वो टू थिंग्स से अफेक्ट होता है. आवर बिहेवियर इज अफेक्टेड बाय टू थिंग्स. व्हाट आर द टू थिंग्स? हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट. हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, नेचर एंड नर्चर, both our biological aspect also and social aspect also, as well as psychological. Means if any person behave like anything, so only not one factor is responsible for it. Biological system भी उसका हो सकता है, अगर कोई person बहुत गुस्सा कर रहा है या तो बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं. साइकोलॉजिकल भी हो सकते हैं, हो सकता है उसकी बॉडी में कहीं पेन हो या कोई डिजीज से वो प्रॉब्लम कर रहा हो या उसकी बॉडी ने ऐसा कोई हार्मोन्स रिलीज किया हो जिसकी वजह से ऐसा हो रहा हो. तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन. ओके, नाउ इनके अलावा अगर पर्सन ऐसे बिहेव कर रहे हैं तो बायोलॉजिकल इज नॉट ओनली द रीजन. समटाइम psychological like social factors are also there which determine the person's behavior. पर्सन का सोशल इन्वायरमेंट कैसा है, पर्सन का कल्चरल इन्वायरमेंट कैसा है, दैट ऑल्सो वेरी मच अफेक्ट द पर्सन्स बिहेवियर. सोशल इन्वायरमेंट कैसा है? When we talk about culture, there is a meaning which is given in your book culture. Culture क्या है? कल्चर किसे आप कहते हो? इसे एक्सप्लेन करना इट्स नॉट एन इजी. अगर हम लोग कल्चर की बात करें तो मेनी ऑफ देम ऑफ यू ऑल सेड दैट मैम कल्चर मीन्स कस्टम्स, बिलीफ, रिलीजियस प्रैक्टिसेस. यस, इट इज ट्रू, दैट इज योर कस्टम. द रिलीजियस बिलीफ, रिलीजियस सेरेमनीज, कस्टम्स, दैट इज ऑल योर culture. But culture is also a man-made part of the environment.
कल्चर क्या है? जो इंसान ने खुद बनाया। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग लाइक इन समवेयर देयर आर डिफरेंट कल्चर्स ऑफ एवरीवन, अलग अलग कल्चर्स होते हैं। ओके, different cultures like like at every home, some people make the culture at home, some people make any kind of culture at school. Let me explain you with the example. जैसे like school ने एक culture बनाया, school has made their own culture and it is made by us, it is made by human being, that every student should like greet the teacher with the good morning, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, आप ऐसे बोलते हो। तो आप क्या कर रहे हो? आप गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून दिस यू आर सेइंग, so you are making a culture. आपके स्कूल ने कल्चर बनाया कि you should be in a disciplined manner, you should be in a well in a uniform, you should come on time. So this is all the culture which is set by the school organization. Similarly at home also, आपके घर में भी आपके पेरेंट्स ने कुछ कल्चर्स बनाए होंगे। So that's why culture is a man-made part of the environment. ये हम बनाते हैं, and it differ from person to person. हो सकता है in your class there are many people. Maybe Sonam at Sonam home there is a different culture. When I go to the Riya's home there is a different culture. So everyone is living in a different culture. कल्चर का सिर्फ ये मतलब नहीं होता, मैंने इतना आपको एक्सप्लेन सिर्फ इसलिए किया कि आपको कल्चर की मीनिंग बता सकूं कि व्हाट इज कल्चर। कल्चर क्यों दिया आपके बुक में कि इट इज अ मैन मेड पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट, बिकॉज इट इज ट्रू, वी मेड इट, हम बनाते हैं इसे। और कल्चर इज नॉट ओनली लिमिटेड टू द कस्टम्स, बिलीफ, रिलीजियस सेरेमनीज। ओके, वो तो है ही है, वो भी आपके कल्चर का ही पार्ट, क्योंकि वो भी इंसान ने ही बनाया। Okay, human beings have made that religious ceremonies. Yeah, we have to celebrate the festival of Navratri, or we celebrate the festival of Diwali, Holi. All these are made by human beings only. So ये भी इसीलिए culture is the man-made part of the environment. Sometimes it is asked in your question that culture is the man-made part of the environment. Explain it. So how you will explain? You should know about it. Similarly, what I am talking about, it is all about the school. Now at home also, in some home, the parents have made a culture that when you enter in the home, you should remove your shoes outside. उन्होंने कभी किसी किसी के घर में आपने देखा होगा कि एक तरह का कल्चर बना देते हैं कि कॉर्नर में आपको अपने शूज या कुछ भी एक कॉर्नर बना देते हैं, वहां पे आपको उसको रिमूव करना है। ओके, तो वो उन्होंने अपने होम का एक कल्चर बनाया। कई कई घर में मैंने ये देखा है कि एक कल्चर होता है कि जहाँ पे थॉट लिख देते हैं, एवरी फैमिली मेंबर राइट डाउन, एक बोर्ड लगा देते हैं घर में, एंड दे राइट डाउन द सुविचार और द थॉट ऑफ द डे। तो दैट इज आल्सो वेरी प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। मींस बहुत अच्छा है ये, इट इज अ वेरी पॉजिटिव वाइब व्हिच इज कमिंग टू ऑल द फैमिली मेंबर। तो ये क्या है, ये उस फैमिली लाइक उस फैमिली का वो कल्चर है। Similarly, every family made their not family, everyone have their own culture and each one differ from each other. So culture is a man-made part of the environment. It also affects the person's behavior lot. Okay. After the culture, there are some processes which we have to study about the culture. Is here we discuss about the three processes. What are the three processes? First, inculturation, enculturation, okay, socialization, okay. Let me write it here. It's not very clear to you all. Inculturation, socialization, acculturation.
Enculturation, socialization, and acculturation. There are the three processes of culture. This all you all have studied. I am just doing the revisions. ये सभी चीजें आपने पढ़ ली है. I am just doing the revision. Enculturation means which you learn by doing. Like no training was given to you. It is that part of culture where you learn by observing. बहुत सी चीजें होती हैं जिसके लिए ट्रेन नहीं किया जाता है आपको, आप देख के ही बहुत सी चीजें सीख जाते हो. यू एक्वायर, दैट इज इनकल्चरेशन. सोशलाइजेशन, जहां पे आपको सोशलाइज किया जा रहा है, आपको ट्रेनिंग दी जा रही है, आपको सोशलाइज किया जा रहा है, तो दैट इज सोशलाइजेशन. इसमें कुछ एजेंट्स होते हैं जो आपकी मदद करते हैं आपको सोशलाइज करने के लिए. Then acculturation. Acculturation means shifting from one culture to another. ये क्या है? एक कल्चर से दूसरे कल्चर में हम शिफ्ट हो रहे हैं. So let us discuss about in detail about the socialization. कौन-कौन से agents हैं socialization में? So there are four main agents. First, parents. Parents आपकी हमेशा फर्स्ट एजेंट होते हैं. देन स्कूल, देन पीयर ग्रुप, पीयर्स, और देन मास मीडिया. These are the four agents of socialization. Parents, school, peers, mass media. They play a very important role in socializing you. First, parents. Parents का बहुत important role होता है, and mother is the first teacher and everything for a child. तो पेरेंट्स, बच्चा सबसे पहले एक्सपोज होता है पेरेंट्स से, फिर देन फैमिली मेंबर्स से, तो वो उनके पहले एजेंट होते हैं सोशलाइजेशन. फिर जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो फिर वो स्कूल में जाता है, तो टीचर्स होते हैं वहाँ जो उनके एजेंट्स बनते हैं सोशलाइजेशन. देन थर्ड होता है पीयर ग्रुप. वो स्कूल जाता है तो टीचर के अलावा उन्हें पीयर ग्रुप भी मिलते हैं, उनके फ्रेंड सर्किल मिलते हैं, वो भी उनसे भी वो कुछ ना कुछ सीखते हैं. अब वो शायद गलत भी सीख सकते हैं, सही भी सीख सकते हैं, वो टोटली डिपेंड होता है बच्चे पे, चाइल्ड पे, पर्सन पे. इसके बाद नेक्स्ट एजेंट है जिससे वो सीखते हैं, वो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस अभी कर रहा है आज की जनरेशन को, आई थिंक मास मीडिया. मैक्सिमम तो मुझे लगता है अभी पेरेंट्स से कम सीख रहे हैं, स्कूल से कम सीख रहे हैं. दे आर मोस्टली लर्निंग फ्रॉम द मास मीडिया, मीडिया, टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन. So this is all about socialization. These are the agents. Now, what is acculturation? I already told to you that acculturation means shifting from one culture to another. उसके लिए कुछ acculturative strategies बताए गए हैं जो आपकी बुक में दिए हैं. And this is the last topic. One important term before I want to discuss with you all. एक वर्ड आपकी बुक में मिलेगा, वो है जीन्स एंड मीन्स. जीन्स मीन्स जेनेटिक ट्रांसमिशन. जब जेनेटिक ट्रांसमिशन होता है तो दैट इज जीन्स. बट व्हाट इज मीन्स? मीन्स इज अ कल्चरल ट्रांसमिशन. मीन्स इज अ कल्चरल ट्रांसमिशन. जब कल्चरल ट्रांसमिशन होता है दैट इज नोन एज मीन्स. यानी हम अपना कल्चर अपने आने वाली जनरेशन को भी फॉलो करती है तो मीम्स हो रहा है. समटाइम्स नहीं फॉलो करते हैं, बहुत से जनरेशन, आगे वाली जनरेशन नहीं फॉलो कर पाती जो भी कल्चर हमने बनाए या हमारे एंसेस्टर ने बनाया. दैट इज. सो आई वांट फ्रॉम यू टू क्लियर ऑफ दिस टर्म जीन्स एंड मीम्स. आफ्टर द जीन्स एंड मीम्स देयर इज अ acculturation which I am discussing with you. So there are some acculturative strategies. So let us discuss what are the acculturative strategies. Acculturative
strategies. What are the first is, you already have read all these things. First is integration. Second is assimilation. Third is separation. Fourth is marginalization. Fourth is marginalization. First is integration, assimilation, separation, and marginalization. Let me tell you what is the meaning of this one. Integration means integrate कर रहा है, मिला के रख रहा है. When the child have interest to maintain his own culture also and other culture also, that is integration. चाइल्ड अपने भी कल्चर को बना के रखना चाह रहा है और जिस भी कल्चर में गया उसको भी बना के रखना चाह रहा है, तो दैट इज इंटीग्रेशन. एसिमिलेशन, जहां लाइक अपने कल्चर को तो मेंटेन कर रहे हैं, दूसरे के कल्चर को नहीं चाहते हैं मेंटेन करना, दैट इज एसिमिलेशन. सेपरेशन, जब अपने कल्चर से सेपरेट हो जा रहे हैं, they want to maintain the identity with the other culture but not having interest in our own culture. Marginalization, no means किसी में interest नहीं है, no means I doesn't want to be like a part of our culture also and other culture also, means not interested in maintaining one's own culture as well as other culture, that is marginalization. So these two terms are very like in extreme. One is integration, one is marginalization. Integration, maintaining both the cultures, and marginalization means किसी भी culture में interest नहीं है maintain करने में. So this is all about our culturative strategies. And आपके इस पूरे topic को in a very sum up मैंने आपको explain किया. Your all socio-cultural basis of human behavior. So this is all about the social aspect of the human behavior and the cultural aspect of the human behavior. So I hope children you all understood about it very properly. So I just say thank you for listening and watching to me. Now, in the next, we will start the study about the chapter 4 revision, which is the human development. So we will meet tomorrow with the new topic, chapter 4, human development. Thank you.